There are quite a few issues which one can talk about, but the revelation of Headley on Ishrat Jahan, about which we had spoken in 2013, the leader of the opposition, Rajya Sabha, then now Finance Minister, had also written a blog. The BJP has been clear then, and our stand, that it was a case of the party in power, and I feel hesitant to say it only because you can't imagine this could have happened, but it has happened, and therefore I'm going to have to say it. The party in power went to the extent of whitewashing facts which had emerged about terrorists. It was such a cover-up where your intelligence agencies gather information about modules which are present in this country, identify, also disseminate that information to state level intelligence officers, and clearly, based on the inputs, the state officers also carry forward what they are otherwise mandated to do. And then suddenly, with the change of a home minister, the government then files an affidavit under one home minister based on the information which the intelligence network has gathered, and then that is getting disseminated also to the states. Action is therefore taken up by the states based on this information. And then you file an affidavit once, and with a change in the home ministry, with a new home minister coming in, a completely opposite position is taken in the second affidavit which gets filed. So this cover-up of what was legitimately gathered as information through the intelligence network as to who are terrorists moving around with probably intention to disturb peace, and here of course it went even further, and later on you say you don't have enough evidence to state that this is a terrorist operation. You change the affidavit with the new home minister. So the cover-up later on becomes the content for the change in the affidavit. And when, after the death of this lady, there are websites in Pakistan which claim that one of their activists has been martyred. And here Indian government is going out of its way to cover up and say, no, she was not even we don't have evidence to say she's a terrorist. And this goes to the court. And as a follow-up, first you have a cover-up to whitewash the fact that there is a terrorist here. And then you have an affidavit which changes with the home minister, change in the home minister. And then it goes to the extent of exposing this country's intelligence network. What is otherwise required, and it is a continuous process of covert operations which are continuously done in order to keep this country safe, both within and in the borders, and at the borders. You expose the covert operations, you expose officers of the intelligence network, you make them a party to what was a CBI probe. Director level officers of the Intelligence Bureau are subjected to being questioned by CBI, probably DSP level officers. A national security level matter comes down to a CBI inquiry.
Look at the way in which this whole thing has been woven only because the Congress party, which was the ruling party then, has a congenital dislike to a person who, much to their dislike, was the chief minister of a state. Much to their dislike, was running that state so successfully that they foresaw a potential political threat to themselves. And so you target him, do anything. You float theories such as white beard and black beard. How much of exercise and application of mind of that time's governance went into building a political conspiracy? You expose the national security. You go to the court with a fictitious tale. You go to the court to say things which are not with evidence or basis of documentary evidence collected. You deny what has been collected by the Intelligence Bureau, which has been shared with the states. Backward and forward linkages only because they wanted to weave the story against a political opponent. Cover up, build the cover up, whitewash, even evidences which are emerging about a terrorist. Go to the court and give one charge affidavit one day and oppose it the other day. Another day when the new home minister comes, that gets nullified. No, that's not my version. This is my version, which is opposed to what I said earlier. And then you go up even further to have a battery of Congress leaders who go on giving statements saying, oh my God, no, there are evidences, there are conversations which are happening. There are people who have said, that man with white beard, this man with black beard. None of this worked. None of this worked, and therefore then you draw the senior official of the IB, subject him to a CBI inquiry, almost hound administrative and police officers belonging to the national level, Indian Administrative Service officers, police officers belonging to the, Indian Police Service. Some of them get co-opted under their conspiracy theory to speak out of turn, to speak without facts, to coerce the state government, which is only working based on the information which has been shared. The battery of Congress leaders who had spoken to build up this conspiracy theory, who had spoken against the chief minister, who had spoken against the home minister then, who I'm happy to say is the president of my party today, go to the extent of building up such cases and even make sure that the persons are all jailed, police officers being jailed. To what extent Congress party's congenital dislike for individuals will guide their politics, could guide their governance, could expose the national security architecture of this country. Today, from the BJP, we demand that everybody, inclusive of the chairperson of UPA, who had all spoken in this matter, who had all spoken, saying, oh my God, there is no terrorist, an innocent girl had been killed, a fake encounter has been, all this is matter of court. But the kind of build-up which was done, we demand today that the Congress party and its leadership and every leader of the Congress party who have really contributed to this artificial debate which was held, to come out and apologize, own up their statements, and apologize to the people of India. Can the national security be compromised just because you wanted to build up a case against an elected chief minister? Can you go to the extent of building theories like white beards and black beards where none existed? Can you deny the fact that the Intelligence Bureau had gone to the details of finding out who are the modules who were working, gathered information meticulously, little by little, and where there was a potential threat, shared it with the state government, and the state governments
officers act accordingly. It happens on an everyday basis. It happens today, it happens 20 years ago, it happened 10 years ago. This continuous process of sharing of information from intelligence happens. You pick up on that one which you don't like, build up, and your vote bank politics dominates in this matter. There are such information shared with other states. Have you ever bothered to pursue it this much? No. Here is an agenda. Your vote bank politics gets served by picking up on this. And therefore you built up on this. And therefore you added theories to it. And therefore your home minister, I find it sacrilegious. I find it sacrilegious that a home minister can go to the extent of changing an affidavit, much against the gathered information of the Intelligence Bureau. Today it's time up for the Congress leadership, the Home Minister, the then Home Minister, to all appear before the media, appear before the people of India and say, and own up this conspiracy that they built up and apologize. Thank you. Sitharaman, I'm not understanding the BJP's stand in this. Is the revelation that she was a terrorist? Is the BJP now saying that the encounter was not fake? And are you therefore denying the report of Smt Tamang, also the court-directed SIT which submitted thereof that it was a fake encounter, and also these people were in jail for so long after the court-directed an investigation and so on. So because a person whose own credentials are very, very suspect, Mr. Headley's, who's supposed to be a double agent and a smuggler and so on, he said that she was a terrorist, and therefore is the BJP denying that there was a fake encounter? And my second question is, are we to interpret that the ruling party also supports gunning down of people who are suspected of terrorism? No, Purnima, I'm glad you're asking all this question. Here we are making a very specific point about how intelligence gathers meticulous information, gives it to states, and states act on the basis of information received in the national security. Haven't we had enough number of incidents where we are saying, did you have intelligence? Didn't you have intelligence shared information? And if you did have, did you act on it? And if you acted on it, why did this happen? Today, the media, the Indian public are fairly aware about why there is a need for sharing of intelligence and why they, based on such, however small or big information received, action is required in public safety. In this case, even then intelligence information was shared, action was taken accordingly. And that was immediately after that incident was corroborated by the fact that terrorist organizations abroad claimed, here is a martyr who worked for our cause. So it is not just one statement today, but this has been happening from the time that this issue is in the public domain. So it is not just Headley, but Headley today, yes, has brought in that additional corroboration. Then you say, when we had talked about it, no, you don't have evidence, you have not questioned people who are involved in it. Now that he's saying, no, he's a terrorist, don't believe. We have to have some, way of corroborating information that we gather. He can't be terrorist today, he's an accused today, he's a double agent today. Earlier, you don't have those actually involved in this telling you about it. Some .com in Pakistan cannot corroborate. So we can't really keep shifting the milepost. Our intelligence agencies themselves had collected this information and shared it to the states. And that was just not for Gujarat. Every state receives on an everyday basis some information from the intelligence. Even that had identified terrorist module in this country, and that is why this information was shared. So that is what I've been. मैम मेरा सवाल है कि
भाजपा का कहना है और आपकी सरकार का भी कहना है कि जो हेडली के स्टेटमेंट आए हैं उसके बाद जो पुलिस अधिकारी इसके लिए जेल में है उनको जल्दी से रिहा करे, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है, पार्टी ने मांग करेगी या नहीं करेगी? नहीं, अब तो कोर्ट में जो मामला है वो कोर्ट ही तय करेगी, हम सरकार से इसके आदेश कैसे देंगे। निर्मला जी, अफजल गुरु मकबूल भट्ट के शहीदी दिवस मनाए जा रहे हैं प्रेस क्लब में, जेएनयू में, देश भर में। अब इशरत जहां पे भी जिस तरह की डिबेट चालू हुई है, आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई सरकार की कोई कमजोरी है जिसके कारण कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं? यू वास्ट अ वेरी डेलिकेट क्वेश्चन। इसको हिंदी में बोलूं तो आई डोंट नो हाउ टू से। बहुत बारीकी से एक नाजुक विषय के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं आप। इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक मसला बनती है कि किस हद तक इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाएगा, मगर तुरंत उसको सरकार की कमजोरी के नजरिया से देखें, वो फाइन लाइन भी है जहां वो सरकार आएगी कि क्या भैया इस देश का नुकसान करने वाले, इस देश के लिए, देश के खिलाफ जंग लड़ने वाले को आप क्यों समर्थन दे रही हो, उसको सेलिब्रेट क्यों कर रही हो। तुरंत एक सेक्शन आ जाएगा कि ये सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बंद करने के लिए कोशिश कर रही है। इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मीडिया इसके ऊपर इस तरह प्रश्न उठा रहे हैं, जिससे जनता में ये चर्चा शुरू होना चाहिए कि कमजोरी है कि सरकार की, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए हम देख रहे हैं कि कितने हद तक आप जाओगे। कब तक देखेंगे निर्मला जी? एक मिनट, कब तक देखेंगे निर्मला जी? आपकी हद किस हद तक आप देखेंगे? ये भी जैसे स्पेस साइंस में बोलते हैं, दूर और टाइम दोनों फैक्टर्स होती हैं स्पेस के फैब्रिक को डिफाइन करने के लिए। ऐसे ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राजनीति में दो, जैसे कपड़ा में वीविंग में ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है एक थ्रेड, इसमें टाइम भी होते हैं, कितने दूर तक एक्सप्रेशन जाता है वो भी होती है। दोनों का मिलजुल होना चाहिए, एंड इट इज अ डेलिकेट बैलेंस ऑफ बोथ। Home Minister Rajnath Singh ji said that the strictest possible action will be taken against those indulging in anti-national activities in the context of what happened or what is happening on the JNU campus. So is the party, I mean, can one assume that the government is now going to crack down on such manifestations? That's exactly the answer I've given you. It is very clear that if there is an action, somebody has gone to the court asking, somebody has gone to the police asking for a filing of a case and so on. Mahesh Giri, our MP, has gone in. So the police will take necessary action as per law. नहीं मैम, नहीं, जो आप कह रही थी कि सेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन हो सकता है खिलाफ हो जाए, तो क्या केंद्र सरकार किसी भी मामले में पब्लिक ओपिनियन देखकर कोई एक्शन ले रही है या एक्शन लेना चाहेगी? नहीं, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में जब बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक झलक है। सो इट्स नॉट एज इफ वी आर एवरी टाइम वेटिंग फॉर पब्लिक ओपिनियन, बट एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ से निकल कर आ रही है? आकाश से थोड़ी ना आती है, पब्लिक ऑपरेशन ही। Mrs. Sitharaman, yesterday your spokesperson described the policemen involved in Ishrat Jahan's encounters as Jabaz Sipahi who gunned down terrorists in an encounter. Now that is hailing of people who have been accused and are being prosecuted by the court for extrajudicial killings. Now, is that I'm a bit confused about the BJP stand. No, you don't need to be confused. I am very clear in my statement, Purnima. I think we are very clear that the information received from the intelligence is respected by every state when it gets shared in public interest. The police officers take action on it. Where there is a question, that is always taken up by the court, and the court will look into it. But to now say, oh no, it is still not established that there is a terrorist in this, is also speaking up for a terrorist, which, going by your logic, if you think people should not be speaking up for the police, people should not also be speaking up for terrorists.
Let there be level playing field. No, I'm not saying anything. They cannot be. Naturally, we are also not saying anything other than what we've stated here. This country believes in its democracy, believes in its freedom of expression. But people who are openly stating and clearly standing up for war against India will also have to be dealt with as per law. If there are questions in it, of course courts are there for us to go and seek justice. But in the meanwhile, to say, oh, you've spoken like this, therefore you are in favor of this and not in favor of that, is not acceptable at all. Just as it's not acceptable at all to constantly keep telling just one party, one government that you are against a particular section because it believes it serves a political agenda of some parties. We are against that too. निर्मला जी, एक छोटा सवाल है कि जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरह के देशद्रोही घटनाएं जो हुई वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद और कई तरह के नारे लगाए गए, इसके खिलाफ क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटना हुई है? माननीय राजनाथ जी का स्टेटमेंट है, बिल्कुल, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से हूँ और उस समय मैं ये ज़रूर कहना चाह रही हूँ, यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ जेएनयू नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत राजनीतिक चर्चा होती है, हर किस्म का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का उधर डिबेट्स चलती हैं। मैं इस पर्टिकुलर घटना में मुझे लगता है कि that discussion which has to happen with a certain limit, probably this time, even in JNU, where very sensitive topics are repeatedly and periodically discussed. मुझे लगता है इस बार सेंसिटिविटी में जिस हद तक आप जा सकते हो उस हद को पार करते हुए हुआ है चर्चा। उसके वजह से आज बहुत सारे लोग पीड़ित है, दुखित है कि ये क्या है, क्या हो रही है। यूनिवर्सिटी में चर्चा होना ज़रूरी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और गर्व से मैं कहती हूँ उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मगर उधर जो फाइन बैलेंस होते थे कि हाँ चर्चा करो, हर विषय के ऊपर चर्चा करो, रात भर चर्चा करो, डाबा में बैठकर चर्चा करो, हॉस्टल में बैठकर चर्चा करो, ये उधर का कल्चर आज भी बरकरार मैं मानती हूँ है। मगर आज जो मैं सुन रही हूँ इसमें सेंसिटिव इश्यू में जिस हद तक आप जा सकते हो शायद उस हद को पार कर लिया है, इसीलिए हम सबको, बहुत सारे लोग को दुख लगता है। मैम, मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जिन्ना सेकुलर थे तो पार्टी के वरिष्ठ पार्टी प्रेसिडेंट को रिजाइन करने के लिए फोर्स किया गया, एक सीनियर लीडर ने किताब लिख दिया तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। ये जेएनयू वाले पे सॉफ्ट स्टैंड इतना क्यों है? क्या पीडीपी के साथ रिलेशनशिप की वजह से ये कोई दिक्कत आ रही है? क्योंकि उनका भी समर्थन रहा अफजल गुरु के साथ, तो ये सॉफ्ट अप्रोच किस लिए है पार्टी का? पार्टी का अप्रोच कभी भी सॉफ्ट ही रहा। शायद आप इसका ऐसे ट्विस्ट देख करके उसका स्टैंडर्ड अलग है, इसका स्टैंडर्ड अलग है बोल रहे हैं। उसी मापदंड के साथ आप जेएनयू का तुलना करिए। आज तक जो डिसेंट चर्चा, एक हद तक चर्चा करने वाले जेएनयू इस बार क्यों पार कर लिया उस हद को? क्योंकि इस बार दिल्ली में एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसीलिए उधर प्रोवोकेटिव तरीके से ये ऐसे पार करने का साहस किया स्टूडेंट्स ने। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ? निर्मला जी, कल भी जितनी भी डिबेट हुई थी जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के लीडर सब यही कह रहे थे कि पीडीपी का क्या स्टैंड है कश्मीर को लेके, अफजल गुरु को लेकर के, और बीजेपी उनके साथ बैठी। आप बीजेपी को क्यों कुछ नहीं बोलते? सब जगह आप पर और पीडीपी के गठबंधन पर ही आरोप लगते रहे। आरोप लगाना, जैसे ये इंटॉलरेंस डिबेट, अवार्ड वापसी डिबेट, ये सब तो चलता रहे। मगर मैं पूछना चाहती हूँ ये सब अब क्यों हो रही है? 2014 के बाद में क्यों हो रही है? इससे पहले इस देश में ऐसे माहौल कभी नहीं था क्या? क्या सरकार की कमजोरी माना जाएगी? बिल्कुल नहीं, आप उसी पॉइंट में रह रहे हैं ना।
मैं अगर सरकार से सिर्फ एक बयान दूं, देखा मोदी सरकार किसी को झेलते नहीं है, ये भावना पैदा करने के लिए ये काम में आएगा। मगर हम, हाँ चाची, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम बात करो, देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर स्टूडेंट यूनियन, हर यूनिवर्सिटी समझदार है, उनके अपने सेल्फ कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि वही है भावना। भारतीय जनता पार्टी के आउटसाइड भावना यही है, हम सबको मालूम है जहां कंट्रोल करना है। अगर कंट्रोल करने वाले क्यों पार कर दिया जेएनयू में हद? क्यों पार कर दिया जब इंटॉलरेंस का डिबेट हुई? चर्च अटैक के ऊपर हमें बार बार क्यों बोले, जब हर एक चर्च अटैक आखिर चोरी का कारण या तो पर्सनल एनमिटी के कारण हुई? इन सब में भाग लेने वाले कांग्रेस के नेता, इन सब में भाग लेने वाले थिंकर, साहित्य अकादमी वाले, आज बाहर आ जाओ, बोलो वापसी अब किए ना, अभी क्यों नहीं कर रही हो? अब भी करो। कर्नाटका में जो हुआ वो टांजानियन विषय में, नाइजीरियन विषय में, कहां है वो वापसी वाले? जाओ, पूरे कर्नाटका में जाओ और पूरे दुनिया को गाली गलौज करके, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी हो उधर जाकर के बोलने वाले लीडर सब जाओ कर्नाटका में। उधर फार्मर्स सुसाइड होता है, कोई बात नहीं करता। उधर ऐसे रेसिस्ट अटैक होता है, कोई बात नहीं करता। कोई अवार्ड वापस नहीं होता। मगर मई 2014 से इस देश में माहौल बदल गया, इसलिए हम वापस करेंगे अवार्ड। आ जाओ पूरे कांग्रेस के नेतागण और अवार्ड वापसी का करने वाले वो पूरे बटालियन आ जाना। आज कहां है वो लोग? क्यों कर्नाटका जाते नहीं है? क्यों कर्नाटका जाते नहीं है? कांग्रेस की सरकार है उधर, इसीलिए। और जो भी होता है इस देश में, किसी भी राज्य में, मोदी जवाब दें उसको। ये क्या तरीका है? प्लीज थिंक अबाउट इट। यू कांट नर्चर अ सिस्टम वेर एक पार्टी के खिलाफ ही सब कुछ बोलेंगे, मगर इतना ब्लेटेंटली प्रो कांग्रेस। दिस डजंट हेल्प। दिस डजंट हेल्प। एंड मीडिया, आई अपील टू यू, इतना ऑब्जेक्टिवली प्रश्न पूछने वाले मीडिया, प्लीज उन सभी लोगों से पूछिए क्यों कर्नाटका नहीं जाते हैं। इंटॉलरेंस के डिबेट को लेकर के मैं आती हूं उनके साथ, बिल्कुल मैं आने को तैयार हूं। इंटॉलरेंस डिबेट कर्नाटका में हो जाए। रूरल डिस्ट्रेस, फार्मर्स के खिलाफ जो हम कर रहे हैं, कांग्रेस ने करता। रूरल डिस्ट्रेस, 500 फार्मर्स सुसाइड, मैं आने को तैयार हूं, प्लीज जाएंगे। कर्नाटका में जो होता है वो हिसाब किताब में नहीं आता, नहीं, उसका भी मोदी जवाब दें। ये क्या डिस्टॉर्टेड डिबेट है जी? इसको प्लीज, मैं जरूर अपील कर रही हूं मीडिया, प्लीज, वेयर इज योर ऑब्जेक्टिविटी? वेयर इज योर डिस्पैशनेट इंक्वायरी? Take this absolutely seriously. You can't afford a distorted debate in this country. This is not freedom of expression. मैडम, इसका मतलब कि पार्टी को अवार्ड वापसी जो हो रही थी उस चीज का डर है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं इस मामले में बोलने से बच रही है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं होता कि हम देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें और देश के प्रति मतलब हमें कुछ गलत बयानबाजी करें। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता। ठीक है, आप क्या सुझाव दे रहे हैं हमें? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि केंद्र में सरकार है और सरकार उसके बावजूद जो है सोच रहे हैं आप? नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रही। हाँ, क्या एक्शन लेना है? आपको क्या उचित लगता है? मैम, जिस तरह से मैडम आपको करना है, सरकार में आपको नहीं, मैं सुझाव ले रही हूँ ना, गलत नहीं है सुझाव लेना। हम तो हर वार्ड में जाकर तो पब्लिक हियरिंग नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ आपसे सुझाव ले रही हूँ। मैं प्रेस क्लब में जो हर एक वार्ड में जाकर के क्लाउड सोर्सिंग और पब्लिक हियरिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे सुझाव ले रही हूँ। मैम, प्रेस क्लब में जिस तरह पीसी चल रही थी, नीचे कुछ लोग गए जब पीसी बंद करवाने के लिए, तो वहाँ पे सरकारी सिक्योरिटी मिली हुई जो लोग ये कर रहे हैं हंगामा, तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने उन लोगों को बाहर निकाला। जिलानी जो है उसको सरकारी सिक्योरिटी मिली हुई है,
उसने भगा दिया, उसके सिक्योरिटी वालों ने भगा दिया जब प्रोग्राम बंद करने गए तो। कब मिला उनको सिक्योरिटी? पार्लियामेंट अटैक में उसको गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं 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 नहीं, कब से मिला है? मैं जानबूझकर पूछ रही हूँ आपको। जब भी मिला आपको, सरकार आपकी है। नहीं 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 नहीं, वही तो ना, सरकार आपकी है बोलने वाले, ये भी बोलो कि कब मिला उनको 2 साल सिक्योरिटी। से सरकार मैं अभी हर हटाऊं? 6 महीने में, हर 6 आपके महीने सुझाव में ये है कि security उनका review हटाऊं? होती है। नहीं नहीं, आपके सुझाव ये है कि मैं हटाऊं? क्यों नहीं हटाना चाहिए? हाँ, आपके आप हर 6 महीने में रिव्यू करते हैं सिक्योरिटी। हटाऊं? 2 साल से आपसे ये नहीं नहीं, एक मिनट। मैम एक्शन तो होने चाहिए। नहीं, इसमें मैं पर्पसली पूछ रही हूँ। यस मैम एक्शन। Are you suggesting that I withdraw that which I have not given? It was given even earlier. तो आप 6 महीने में रिव्यू तो करते हैं ना। ठीक है, मैं सुझाव लेती हूँ आपसे। You told that issues like JNU are continuing. So do you compare the issues with Hyderabad and JNU, Sangli University? No, no, I'm not getting into any comparison here. Then why continuing issues? Excuse me? No, you told that issues like JNU are continuing in many Sangli universities. No, I don't know whether you got me right. I'll replay the tape. Such discussions are going on. Discussions in universities do go on. Are you saying no? So That's what I've said. Discussions in university on all political issues do go on. That's it. That's a matter of fact statement. Where are you trying to compare one with another? I have not pitched one particular issue with another particular issue. It is a culture of universities to discuss, is what I've said. If you want to extend it to anything, I'm not responsible. दूसरा विषय पूछ लें? हाँ जी बिल्कुल। ये जो पार्लियामेंट की कमेटी है जिन्होंने कहा कि एमपीज की जो सैलरी है उसको दुगनी कर देनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि दुगनी होनी चाहिए एमपीज की सैलरी? I don't know what the recommendation is. मैं देखती हूँ, उसके बाद मैं कमेंट करती हूँ। मैं उसका नहीं, वो उनका रिकमेंडेशन तो मैं समझ लेना चाहिए ना, उससे पहले बात कैसे करूँ? वो मामला लोअर कोर्ट में चलता रहेगा, हालांकि एग्जाम्प्ट किया गया है सोनिया और राहुल। हाँ जी, आज सुप्रीम कोर्ट में नेशनल हेराल्ड के मामले में ट्रायल कोर्ट में केस चलना चाहिए, ये तो करार कर दिया। मांग यही था कि उसको क्वाश करें, वो क्वाशिंग को सुप्रीम कोर्ट एग्री नहीं किया है, ट्रायल होने के लिए ही एग्री की। सो ट्रायल कोर्ट में इस मामला चलेगी। उनका पर्सनल अपीयरेंस के बारे में ये बात बोले हैं कि हर बार ना सही, मगर जब भी ट्रायल कोर्ट उचित समझेगा तब उनका अपीयरेंस आवश्यकता है तो होना ही चाहिए। दे हैव नॉट बीन एग्जेम्प्टेड ब्लैंकेट। So that's what has developed today. So the trial will go on National Herald. Thank you. अरे विकास जी, आप लास्ट में सवाल कैसे पूछेंगे? हाँ, आप तो इतना सीनियर है, पहले से पूछना चाहिए। आपने कहा कि अवार्ड वापसी गिरोह कहाँ पर है, इस मसले पर क्यों नहीं आ रहा है? आप भी जेएनयू की स्टूडेंट रही हैं, क्या आप अपनी डिग्री नहीं लौटा सकती इसकी? मैं पहले भी अवार्ड वापसी में नहीं गई थी। आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर पहले एक किसी न किसी विषय में अवार्ड वापसी में गई तो अब आप बोल सकते हैं। आई नेवर बिलीव इन दैट। अवार्ड इज गिवन बाय अ बॉडी विच रेस्पेक्ट्स यू। आप वापस करके उस बॉडी को इंसल्ट कर रही हो, वो अलग बात है। अगर उस कुछ मैटर के खिलाफ हो तो चर्चा करो, यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नहीं, अवार्ड वापस करेंगे? अरे, और कोई लोग अभी वापस भी ले रहे हैं, वो जो वापस हुआ उसको तुरंत वापस भी ले रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैं उस लीग में नहीं हूँ। नर्मला जी, on rubber import duty, farmers demanding for increase rubber duties. Huh? Is there any decision? On what? Rubber import duty increase. The duty has been increased. I have myself increased it twice. And in fact, after that, I have even regulated the import to 2 ports only and not all ports. If there is a request to change the 2 ports into some other 2 ports, well, I will consider it. But there's nothing more at this stage for me to talk on rubber.